biggest news development of the day, and it came from Haryana. Because within 10 hours of the news break, Haryana had a new chief minister and the BJP had one ally shot. A change of guard in Haryana. Nayab Saini takes charge as the new chief minister, replacing Lal Khattar, who resigned shortly earlier. Now, from the old Haryana cabinet, BJP leaders Kamar Pal Gujar, Jai Prakash Dalal, Banwari Lal and Mulchand Sharma also took oath as Haryana's cabinet ministers. Independent MLA Ranjit Singh Chautala also has taken oath as the minister in the BJP-led state. The JJP and the BJP are now no longer allies, and interesting to note, 4 of the 10 JJP MLAs were there at the oath-taking ceremony. All right, let's quickly cut across to our reporters. Poulami Saha joining us live. Poulami, take us through the various factors that this change was affected and as quickly as it was. Absolutely. As far as the BJP was concerned, that was a very sudden decision taken by the party. Though, of course, we'd heard murmurs concerning the same for a very, very long time in the past 5 years, concerning, of course, whether Manohar Lal Khattar would be replaced, would be dropped, and, of course, the strained ties between the two former partners now, BJP and the JJP. It appears the BJP has killed 2 birds with 1 stone. One, of course, what they've done is they've snapped ties with the JJP, which allows it to go into the elections in 2019, the Lok Sabha elections, all by itself, and of course solidify its own ground in Haryana as well. Then the and the JJP and the Congress will eat into each other's votes then, which only stands to benefit the Bharatiya Janata Party. So it's a calculated political decision as well that the BJP has taken. It was not all about the give and take that was happening between the JJP and the BJP concerning Lok Sabha seats. Also, the fact that there was so much anti-incumbency against Manohar Lal Khattar. You brought in someone who already is the state president of the Haryana unit, is considered to be extremely close to Mr. Khattar, but of course has been chosen by the top brass, the High Command, for a certain reason, that he will in fact manage the government in the interim period, and of course it will be incumbent that he takes instructions from the central leadership and effect all of that on the ground, and they believe so that Nayab Singh Saini will be able to do that as well. So the anti-incumbency factor, which was becoming quite a worrisome factor for the Bharatiya Janata Party going into the assembly elections of Haryana. The Lok Sabha elections, they believe they're on a strong footing, especially because of Prime Minister Modi's charisma. He will campaign their past performance in 2019, but assembly was the bigger worry, and now they've got enough amount of time in order to build the ground going into the assembly elections that will hopefully happen in October 2024. All right, Poulami, appreciate you joining us. Let's quickly cut across to Ravindra Singh Sharon, senior journalist, who's also live with us. Sharon ji, अगर आप क्या अनुमान लगाते हैं, ये जो चेंज इफेक्ट हुआ है, जो 11वां सीएम हरियाणा को मिला है नायाब सिंह सैनी के नाम पर, जो जेजेपी से जो नाता तोड़ा है, क्या लाभ मिलेगा बीजेपी को, या आपको लगता है कि अब जो एंटी इनकम्बेंसी है स्पेशली स्टेट इलेक्शन के लिए वो अभी भी मुश्किल है? This issue of severing ties with the JJP, it was a premeditated and well deliberated step which they have taken. In fact, the pollsters who have been closely watching the politics of Haryana, they have been saying it since quite long that JJP and BJP, they won't go together in the coming elections. Or the day this election was forced, the reason of their separating their ties is the same still. जिस दिन इन्होंने अलायंस किया था उस दिन भी इनका दोनों पार्टीज का अलग अलग वोट बैंक था, और आज जब ये दोनों पार्टी हट रही हैं तो उसी वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए एक अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं, ताकि चुनाव जीतने के बाद दोबारा से एक बार फिर अलायंस कर सकें। जहां तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी पहले ऐसे ओबीसी लीडर हैं जो उत्तर हरियाणा से आते हैं, और उत्तर हरियाणा, आज तक यही एलिगेशन उत्तर हरियाणा के लोग हमेशा कहते रहे, उनके मन में एक बड़ी टीस है कि इस इलाके का कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है, और इस इलाके में डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है जहां जो कि हमने उन इलाकों में देखी जहां पर डेवलपमेंट हुई है, अब जहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे सिरसा हो, या भिवानी से मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस इलाके को हमेशा इग्नोर किया गया। दूसरी बात, जो बीजेपी को सबसे बड़ा सेटबैक यहां पर लगा था, 2014 के चुनाव में एक बड़ी 27 सीटें इस जीटी रोड बेल्ट से आई थी, जो पानीपत से लेके और पंचकुला तक की बेल्ट है।
उसके बाद जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें इस इलाके में एक बड़ा ही इमोशनल इशू था कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ गलत हुआ। किसान आंदोलन के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये वही बेल्ट है जहां पर पंजाब के साथ लगती हुई इलाका है और इसके सेंटिमेंट पंजाब से बहुत मेल खाते हैं। तो अब यही थी कि वो जो नुकसान हुआ है उसको किसी तरीके से वापस लिया जाए, उसके कंसोलिडेशन वापस वोटों का किया जाए। लेकिन इस बार जो कैबिनेट का रिशफल कैबिनेट जो आज मंत्रियों ने शपथ ली है प्रीति जी, उसमें एक बड़ी हैरानी की बात है कि जो अहिरवाल का क्षेत्र है उसमें से कोई विधायक जो है उसको मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसा आमतौर पर देखा नहीं जाता है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है ओबीसी का, यादव बहुल इलाका जो अहिरवाल का है, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का जिला आता है। और वहां पर बीजेपी बड़ी जीत के साथ हमेशा आई है, 2014 हो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार वहां से जीरो रिप्रेजेंटेशन है कैबिनेट में। पर अभी तक पूरा कैबिनेट रविंदर जी कहां कंप्लीट हुआ है? नहीं, लेकिन अभी तक जो हुआ है ऐसा होता नहीं है आमतौर पे प्रीति जी की इतनी बड़ी जो स्टेट की जाति है ओबीसी की, अगर क्योंकि बीजेपी बात कर रही है, और नॉन ओबीसी जो नॉन यादव ओबीसी उनको ज्यादा प्रमोट इस मंत्रिमंडल में देखा गया है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा का जो ओबीसी है उसको लिया गया है, लेकिन सदर्न पार्ट का जो यादव है जो कि एक कोर वोटर है हरियाणा में बीजेपी का, और हमेशा लोकसभा विधानसभा में और यहां तक कि जो किसान आंदोलन हुआ था उससे बिल्कुल अछूता रहा। उन्होंने किसान आंदोलन की कोई मदद नहीं करी, कोई सपोर्ट नहीं करी, बावजूद उसके उसको इग्नोर किया गया है। तो ये एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स है जो अभी फिलहाल हमको तो समझ आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो पूरा कैबिनेट है जिसमें 6 जो मंत्री बने हैं वो सब पुराने लोग हैं, नया मंत्री कोई नहीं बना है। लेकिन जेजेपी के लिए बहुत वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, उनके लिए तो कैच 22 की सिचुएशन है मैं कहूंगा, क्योंकि जेजेपी की कल एक बड़ी रैली होने वाली है और आज 5 विधायक उनके साथ आए नहीं, यानी कि 5 उन्होंने जो पार्टी के सुप्रीमो ने एक लीडर मीटिंग कन्वीन की थी उसमें विधायक। रविंदर जी एक बार उस पर बने रहिए, अभी वापस आते हैं जो जेजेपी का क्या फॉर्च्यून है और कांग्रेस को कितना हार्म पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो बात करते हैं। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन आवर अदर गेस्ट राशिद किदवाई इनटू दिस कॉन्वर्सेशन एंड विल गो बैक टू रविंदर सिंह शरोन। बट Rashid Kidwai, how is the Congress looking at it? Because it does seem that the Congress had smelled advantage where it came down to the state election. Lok Sabha still tough where Haryana is concerned on those 10 seats. Is the Congress in a wait and watch policy or will actively try and destabilize this government? Preeti, I think Congress views this today's development as an opening, but opening more for assembly election, not so much in terms of Lok Sabha election, where Congress thinks that, getting even 2-3 Lok Sabha seats, it's quite a formidable challenge. So therefore, they are not very keen to destabilize, this Nayab Saini government, because they think that is not going to help. They're not going to be successful because of that multi-layer kind of defense mechanism that the BJP has, both at formal and informal level. And second part is that Congress will be seen as a political party which is, trying to, upstage a lot of things. They want to win, elections in October 2024 assembly election in a very clean and transparent manner. And that's the thing, because, if they need to, because the equation between Dushyant Chautala and Congress is far from settled. I mean, both the Huda, father and son Huda, they're very clear. They think they're the sole kind of, vote getters in terms of, Jat votes. So they don't want to share that kind of glory with anyone else. So this is a problem. So a lot of compulsions are saying. Right. Go ahead, sir. Go ahead. Make your point. I believe there was high-level meetings have taken place on this count, and they are going by what Bhupender Huda's assessment, and is at present he has advised them have a hands-off policy and let this BJP totter further and further in terms of caste equations, etc.